इस वीडियो को और बेटर वे में जानने के लिए प्लीज़ इसका पार्ट 1 भी देखिए, जहाँ पर आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं 3 फेजेस। शोवाल्टर हैज़ डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर इनटू 3 फेजेस, फेमिनिन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल। फेमिनिस्ट फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें फ़ीमेल राइटर्स कॉपी करने की कोशिश करती हैं मेल वैल्यूज़ को, मेल राइटिंग्स को, एंड यूजुअली डिड नॉट एंटर इनटू any kind of debate, any kind of protest, and female writers often employed male pseudonyms or male names to be a writer during this period. Next comes the feminist. The feminist phase, जिसमें कि central theme of work हुआ करता था protest. Women advocated rights and protested, and the central theme of works by female writers was the criticism of the role of women in society and the oppression of women. Next phase, female phase. During this phase, women writers were no longer trying to prove the legitimacy of their work, legitimacy of women's perspective. Rather, it was assumed that the works of women writers were authentic, women writers' work were valid, and the female phase actually lacked any kind of anger against males. आइए अब जानते हैं फर्स्ट फेज को डिटेल में. The first phase or feminine phase, Showalter argued, occurred between 1840 and 1880. And during this period, women wrote with an eye to match men's achievement. Works written in this phase show women internalizing or adopting male assumptions about female culture. Male pseudonyms were a fashion of this time, were a symptom of this time. For example, Mary Ann Evans wrote as George Eliot, Charlotte Bronte published as Currer Bell, and French novelist Aurora Dupin became George Sand. As Virginia Woolf wrote regarding the same period, a woman writer at the time was admitting that she was only a woman or protesting that she was as good as a man. So, this phase was actually the imitation phase. 1840 to 1880, women wrote in an effort to equal the intellectual achievements of the male culture and internalized its assumption about female nature. ये फेज़ प्रोटेस्ट का फेज़ रहा 1880 से लेकर 1922 तक का. द फेमिनिस्ट फेज़. द फेमिनिस्ट फेज़ वॉज अ पीरियड ऑफ द विनिंग ऑफ वोट एंड मेनी अदर राइट्स हिस्टोरिकली बाय फीमेल्स. And females use literature to dramatize the ordeals of wrong womanhood. Women artists role in term of responsibility to suffering sisters. तो ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड की फीमेल सफ़र कर रही हैं और पूरे वर्ल्ड की राइटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है टू शो दो सफरिंग्स. सो इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय women's writing that protested against phallocentrism. फेलोसेंट्रिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. फेलोसेंट्रिज्म इज़ द आइडियोलॉजी दैट फेलस द मेल सेक्शुअल ऑर्गन इज़ द सेंट्रल एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड, जिसका एक सीधा सा मतलब है कि मेल्स इस दुनिया को चला रहे हैं. सो इट वॉज कैरेक्टराइज्ड अगेंस्ट फेलोसेंट्रिज्म एंड एडवोकेटेड women's right and values and freedom. The female writers of this period were Elizabeth Gaskell and Gilman. नेक्स्ट आता है फीमेल फेज, जो कि 1920 से आज तक चला आ रहा है. दिस इज़ वन ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी फेज, और शोवाल्टर की लैंग्वेज में ही अगर जाने तो शी सेज women reject both imitation and protest, two forms of dependency, and turn instead to female experience as the source of an autonomous art, extending the feminist analysis of culture to the forms and techniques of literature. So, the third phase is the female phase, during which women writers undergo self-discovery, whereby they try for a literature of their own and stop being imitators. Males को ना copy कर रही हैं, males को ना protest कर रही हैं. So, it is the current phase and has witnessed the emergence of gynocriticism. For example, Dorothy Richardson and Virginia Woolf were leading writers of this phase. So now, in short, we can say that gynocriticism is an idea of re-examining history, particularly literature in history, in light of a better understanding of women as writers. Because of historical gender bias, women have typically been disregarded and their work has been considered unimportant.
In the light of cultural views of women, gynocriticism attempts to go back and examine the true cultural impact of female authors and historical figures to understand both what they truly accomplished and how they were oppressed during this process. Let us cover few MCQs now which can be part of examinations. Question number 1. Gynocriticism focuses on which of the following? Criticism on women, criticism by women, criticism of male writers by women writers, or women as writers. So option number D, women as writer, is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ टाइटल्स को उनके ऑथर्स के साथ मैच करना है. यहाँ पर अगर आप बाकी ऑप्शंस को नहीं भी कंसीडर कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन वाज रिटन बाय एलन शोवॉल्टर. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिटरेचर ऑफ देयर ओन को ऑप्शन नंबर 2 एलन शोवॉल्टर के साथ मैच किया गया है. अ लिटरेचर ऑफ their own, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, a literature of their own, British women novelists from Bronte to Lessing is a pioneering masterpiece in feminist studies. The book impresses the reader with Showalter's groundwork to revive the interest in long forgotten women writers in British literature. Next question, an easy one. Ellen Showalter is associated with which of the following? Feminism, cultural materialism, structuralism, or reception. So option number A is the correct answer. Next question number 4. Who describes the development of feminist theory as having 3 phases? Neera Desai, Juliet Michel, Simone de Beauvoir, or Ellen Showalter? Now we know Ellen Showalter. Option number D is the right answer. आपको ये क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि अभी अभी आपने ये टॉपिक किया है एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, पर जनरली ऐसा होता है कि टॉपिक पढ़ते वक्त तो हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इन एग्जाम वी गेट कन्फ्यूज. सो प्लीज़ अपने दिमाग में इस टर्म को फीड कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5, गाइनोक्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलन शोवॉल्टर. Question number 6. Which of the following phase is not suggested by Showalter regarding women's writing? The feminist phase, the feminism phase, the female phase, or the feminine phase? Option number B, the feminism phase, is the right answer. Next question number 7. What does gynocriticism support the most as an approach to literature? तो आप यहाँ दी गई सारी ऑप्शंस को देखिए. मैंने 5 ऑप्शंस दी हैं और एनालाइज करिए पूरे वीडियो को, एक बार दोबारा सोचिए, दोबारा देखिए और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आई होप द वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.